Hello everyone! Happy Diwali! So this week's vlog is going to be something really different. As I had already shared, मैंने आप सबको बताया था last time that there's a secret, and वो secret ये है कि मैं और Pumpkin, जी हाँ Pumpkin, हम दोनों जा रहे हैं आसाम. Finally! Welcome back to प्रियू बोले. So आज का जो vlog है वो मैं completely आप लोगों को दिखाऊंगी कि how me and Pumpkin we both are traveling to Assam. Since এইটো এটা বহুত ডাঙৰ এটা কনফিউজন হয় বা বহুত মানুহৰ ডাউটস থাকে পেটছক লৈ পেনে কেনেকৈ জাৰ্নি কৰিব লাগে. So there are several modes of transport to travel with your pets. So there are several modes of transport to travel with your pet into safety, security, and the main part, money. Okay, so বহুতখিনি কথা আছে, যিখিনি বহুতখিনি ফ্যাক্টৰস আছে, যিখিনি কাৰণে বহুত মানুহে পেটছক লৈ পেনে ট্ৰাভেল কৰাটো অকমান ইস্যুইষ্টিক পায়. Kintu, since we are pet parents and we cannot leave them behind, it's injustice for them. And also we cannot stay in the same place because our ghor, our ma deuta, our সকলো পৰিয়াল obviously অসমত আছে. So এতিয়া আমি গৈ আছো অলপ দীঘলীয়াকে গৈছো, সেইকাৰণে মানে ভাবিলো যে why not take Pumpkin also with us. So with me actually, I am the one who would be traveling alone with Pumpkin. So আমি decide কৰিছো Pumpkinok by air লৈ যোৱাটো. So we have received all of the details, all of the documents. আপোনালোকক স্ক্ৰিনত দেখুৱাম কেনেকৈ আমি কি কৰিলো. আৰু yeah, it's a big challenge for me, and I wish and I hope and I pray that সব ভালে ভালে হৈ যাওক. So এই উইকটোত গোটেইখিনি কেনেকৈ কি কৰিলো সেইখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাই যাম. So chalo, let's get started. Today's topic is really interesting. Today I am going to disclose a secret with you all. Say Pumpkin, say hi to everyone. Hello. So today's vlog is Pumpkin special, which means moi aru Pumpkin goi asu Ohomole this week only. And isliye humne socha ki to all of the pet parents who are so much confused as on how to fly with their pets and everything, इसलिए हम दोनों ने सोचा आप लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप हम गाइड शेयर करेंगे कि हमने कैसे फ्लाइट टिकट्स किए. Yes, we are going by air, which is very risky, but I hope we make it. We will make it, I know. Pumpkin, we will make it, right? Yay! इसको तो पता भी नहीं है what is going to happen. Anyways, happy Diwali to you all, and obviously let's get started with this vlog कि हमने step by step कैसे सारी चीजें start की. Okay? Honestly guys, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि Pumpkin को लेके मैं कैसे ट्रैवल करूँ. I was so stressed, but then I got this fab team, Global Pet Cap Services. They helped me a lot from contacting for everything, each and minute details. They even shared these videos to help me, and group बनाया, वहाँ पे सारे details share किए. They even sent an email to Akasha Air with all the details, and voila, we got confirmed. ये है इतना क्यूट सा Pumpkin का टिकट, एंड ये हमारा कंबाइंड टिकट. आई एम सो ग्लैड. तो इसमें आया है Pumpkin का क्रेट. तो इसमें चक्का है नहीं, मतलब ले जाने के लिए तो है अंदर, पता नहीं क्या है. लिफ्ट तक छोड़ दोगे? सॉरी.
By the way, Global Pet Cap सिर्फ टिकट्स ही नहीं करवाता. They provide end-to-end pet travel services including international pet travels as well. From documentation, crate, pickup, drops, सब कुछ एकदम smoothly. देखो, Pumpkin is also ready. He is so comfortable. Gate खोलते ही अंदर चला गया crate के. And now he is sitting also so comfortably. I think he will enjoy this ride. This is his first fly. And I'm so proud of my baby that he is the first flyer now. And I really hope सब कुछ अच्छे से चला जाए. Just देखो कैसे वो जा रहा है. He's so happy inside the crate. He's enjoying this. ये crate का size pumpkin के लिए बिल्कुल perfect है. See, he can even turn around, he can sit, he can do everything. So it's a very comfortable journey. So really, thank you so much Global Pet Cap for your help. If you guys are from Mira Road or nearby, definitely visit Lavish Tales. They are super professional yet so affectionate with pets. मैं तो हमेशा pumpkin के लिए इधर ही आती हूँ. एकदम safe and trustworthy hands है इनके पास सारे facilities हैं. Basic grooming से लेके styling से लेके nail trimming, paw cleaning, and even Pumpkin is so comfortable with them. You can see these are their pets. शेरू, अच्छा ये शेरू है. अच्छा वो है पीनट. हाय शेरू. ये है पीनट सोया हुआ है. और एंड कुकी. हाय. Lavish Tales की सबसे खास बात ये है कि they do all with so much love. Now we came to buy muzzle for Pumpkin. And now here Pumpkin is getting ready. नहा के हो गया उसका. He is getting blow dried. And look at Peanut. She is becoming so cozy. Wow. क्या है ये? हीरो बन गया ये तो. हैंडसम बन गया. ओह हैंडसम हीरो बन गया तो. हाँ सुना. वाह. हीरो बन गया. हीरो आपका भी ले लेते हैं. थैंक यू सो मच. है ना Pumpkin? थैंक यू बोल दे. फिर आएंगे. कब आएंगे? वो मार्किंग देगा अभी वो. हाँ इसका वही है नाटक. पेट फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट के लिए हम आ गए Pumpkin के डॉक्टर के यहाँ. डॉक्टर अजीज बटे एंड हिज क्लिनिक्स नेम इज़ ज़िनिया पेट क्लिनिक एंड दे आर रियली अमेजिंग. पेट फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट 24 to 48 आवर्स तक ही वैलिड होता है. सो डॉक्टर अजीज बटे वॉज द बेस्ट पर्सन टू बी हियर. एंड लुक एट ऑल दीज क्यूट बीगल्स. यहाँ तो बीगल पार्टी चल रही थी. इट वॉज फुल्ली लाइक अ बीगल डे वाइब्स. सीरियसली. Also, let me tell you, many people are not aware about beagles and their characteristics and many things. So here are some fun facts about them. Beagles are called the merry little hounds. They are super curious, have an amazing sense of smell, और सबसे important तो they are total love bugs. You can see here the one is named as Evie, another one was named as Jingle, and Pumpkin हमारा यहाँ पे एक लौता लड़का था. So he was getting all of the attention and also देखो कैसे वो इन सबको भाव दे रहा है. And he was also trying to impress these girls. Seriously, इनमें भी यही सब होता है. It's so good to see so many beagles around here. Pumpkin को इनके बीच में हीरो बनते ज़्यादा टाइम नहीं लगा. As you can see, he is all decked up. नहा धो के एकदम ग्रूम बन के ये दोनों सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी लड़कियों के पास. It's like a beagle party. It's like it feels so great. This is inside doctor's clinic. And yeah, shooting is not allowed. So सब ready है. Tickets, crate, fit to fly certificate और excitement to sky high. Now we are all set for our flight from Mumbai to Assam with Akasa Air. लेकिन airport experience कैसा था? Smooth या थोड़ा stressful? Find out in part 2. Dropping next Sunday. Don't forget to like, comment, share and subscribe because Pumpkin का ये पहला फ्लाइट है and it's going to be epic.
I am so excited to share पूरा airport adventure from check-in to take off. So stay tuned.